In this lecture, we will discuss about DC machines. When we talk about machines, these can be divided into basically two types. One is your static machines and one is your dynamic machines. Static means just like transformer we have earlier studied. In static machines, there is no moving part in the machines. Machine is static at a place, and its working is also static, so there is no friction and windage losses. But when we talk about dynamic machines, according to the supply, I divide dynamic machines into two types. One is your DC and second one is your AC machines. Means DC is supply and AC is also supply. What is this word machine is? If I am talking about taking transformer exception, ट्रांसफार्मर को छोड़कर अगर मैं बाकी जितनी भी डायनामिक मशीन्स हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मशीन्स, देन दैट मशीन्स हैविंग two parts. Means we can call it as DC motor and we can call it as DC generator. When motor and generator उनको combinedly मैं बोल देता हूँ तो I am talking about DC machines. Means if I am talking about DC machine, it can be a DC motor and DC generator, and when I call it as AC machines, then it could be a DC AC generator and AC motor. In this machine, if I am talking about the basic structure of a DC motor and DC generator is quite same, and we will discuss it in this section. If you people might be able to see a diagram. In this diagram we have a structure, that is the sectional view of the machine. This is a sectional view of a DC machine, which may be a DC motor and DC generator. You people might be seen that this is the whole periphery I am talking about. This is a circular structure which is fixed and rest on the ground. This is called as a stator. And this middle portion, it is on a shaft. This is a shaft. You are seeing a machine from the side, na? This is a shaft on which there is a structure which is mounted, and this will be rotate accordingly according to the direction of current in it. Means when we talk about the stator is nothing, it is a static structure on which the stator poles are mounted. Means this is pole, this is pole, this is pole, and this is pole. Stator poles are mounted. And what is a rotor? It is a rotatory structure on which the rotor armature is mounted. When we see it from here, this stating structure is called yoke, and these are called poles. This one, this one, this one, and this one are called pole. And the windings and the wires, you people might be seen that the wires which are wound here are called pole winding. What is called as pole winding? Means this is also pole winding, this is also pole winding, this is also pole winding, and this is also pole winding. And this winding is done in such a way that alternating poles will be wound there. Means you people might see that here this is wound from here, but this is not wound from here, this is wound from the other side, so that the alternating poles will be there. The winding on the poles in case of DC machine is called field winding. What is called? Field winding. And the winding where there is one more winding, this is the armature. In armature there is a this is the dots दिख रहे हैं आपको. These dots are called conductors. These are conductors. These are conductors, and a current is flowing through them. And for that there is a given supply is here. This supply is given with the help of these are the brushes. These are the brushes, and this is segment. ये छोटे छोटे segment जो आपको दिख रहे हैं, this is nothing. This is a commutator. You can see it from here. This is commutator. This is brushes. This is armature conductor, and this is armature. Means a full machine is made up of stator and rotor,
in stator there are field poles and a field winding is there, and in a rotor there are armature and armature winding is there. So this is the just like a basic structure of the electrical machine, which is just like a DC machine. Means this machine could be a DC generator or DC motor according to the supply. In case of generator, what is generator? In case of generator, what a generator? Electrical energy is mechanical energy is converted into electrical energy, and in case of motor, the electrical energy is converted into electrical to mechanical. Okay. From here, you people might seen that this is not a DC machine, but this is here this is not a structure of DC machine generally, because I know, you people might find it same, but I know this is not a structure of DC machine, but you can see it from here. This is your rotor and this is your stator. Rotor have conductors. These are conductors I am talking about. These are conductors, and these are conductor which are shorted here, and these are the poles. But these are the poles of the AC machine, है ना? But for understanding, it make here. But you people might that this is a yoke. This is a yoke. This is a stator. These are the poles. These are the poles. Here, there, in case of if I am talking about a AC machine, here we have a commutator. This is your armature core. This is called armature core, and armature winding is there. Means these are the windings, and there should be some brushes over the, just like this. There is some brushes. If I am making here is some brushes resting on the commutator segment and give the supply to the structure. Okay, you people might be understand from here. This is yoke. So what is yoke? Yoke is nothing. It is a structure which is made up of cast iron and sometimes cast steel. This is a same structure of the. This is a same structure of the winding that I am talking about. This is the structure of. These are the brushes. This is your commutator. This is commutator, and this is also on the shaft. There is a shaft from here and here. There is a shaft. This is armature. There is a winding done on the armature, and this winding is connected to the commutator here, and these commutator, देखो, अगर आपके पास, if I am talking about your DC motor, how a torque is produced there? For production of torque, there is a Fleming. There is a law that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a force. When talking about motor के लिए क्या बोला गया है? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. तो means अगर यहाँ कोई magnetic field है, इनमें और इनमें, इसकी वजह से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए जो आपके कंडक्टर्स हैं जो इसके बीच में रखे जाएंगे, देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ रखा जाएगा, तो उसके लिए उसमें क्या होना चाहिए? करंट भी होना चाहिए. तो करंट कहाँ से दिया जाएगा इन केस ऑफ मोटर? यहाँ से. तो यहाँ से, क्योंकि ये रोटेटरी है, अगर इसको क्या किया आपने, सीधा कनेक्शन दे दिया, जो घूमेगा तो वायर टूट जाएगी. तो इसके लिए क्या किया, एक ऐसे स्प्रिंग अरेंजमेंट के साथ एक ब्रश रख दिया, और उस ब्रश के पीछे क्या लगा दिया? कंडक्टर. तो क्या करेगा? स्प्रिंग उसको दबाए रखेगा, किस पे? रोटर पे, और वो क्या करता रहेगा? करंट देता रहेगा. ओके, दिस इज कम्यूटेटर. This is your commutator, and these are the brush. You can see it from here. This is commutator, and these are the brush, and this is the rotor coils. This is your shaft.
This is your general structure of the machine. The commutator is mounted on the rotor of the DC machine, and commutator and brush is arranged works like a mechanical dual converter. Means if I am talking about DC machine, if there is a generator, will produce DC? No, any rotating machine can't be produce DC, because when there is a production of EMF in case of रोटर, तो वो भी कैसे होगा? दिस इज योर AC, क्योंकि ये क्या है, एक हाफ साइकिल के लिए और ये क्या है, दूसरे हाफ साइकिल के। जब कोई रोटेटिंग मशीन है तो वो अपनी EMF ऐसे ही जनरेट करेगी, लेकिन हमने क्या करना है, बाय मीन ऑफ सम मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डायरेक्ट। हमें क्या करना है, क्योंकि DC जनरेटर है तो उसकी आउटपुट कैसे होनी चाहिए, DC, तो हमें इसको कैसे बदलना है, DC में। जस्ट लाइक योर रेक्टिफायर। तो जो रेक्टिफायर का काम क्या होता है आपका, AC इंटू टू DC। दिस इज व्हाट योर रेक्टिफायर डज। सो योर आपका जो कम्यूटेटर है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग और मैकेनिकल रेक्टिफायर। रोटेटिंग और मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो ये क्या करता है, दीज आर द, देखिए इनके बीच में क्या होती है, जगह होती है। तो ये जो कनेक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, जो हाफ साइकिल आपका नीचे जाना था वो फिर से ऊपर चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका अरेंजमेंट ऐसे किया होता है कि जो आउटपुट है आपको DC मिले। तो ये फ्लक्चुएटिंग DC है, यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। You can understand the working of a commutator from here, how it works. Means this is your commutator, this is your commutator segment, this is your commutator segment and this is your commutator segment. ये ब्रश यहाँ से यहाँ पास करेगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा, जब आपका साइकिल जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आपका साइकिल रिवर्स मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो इसके पास अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी। बिकॉज क्या होगा, जो आपकी डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होती रहती है। जो आपका AC का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ जो AC है उसका मतलब क्या है, ये मीन्स ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इसमें भी क्या होगा, एक बार डायरेक्शन करंट की ऐसे होगी और एक बार क्या होगी, डायरेक्शन करंट की क्या होगी, ऐसे होगी। मतलब 1 सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो ये डायरेक्शन करंट की क्या हो रही है, 50 बार ऐसे हो रही है, 50 बार ऐसे हो रही है। लेकिन अब अगर ब्रश है, ब्रश में क्या होगा, जब ये करंट ऐसे है, ऐसे आ रहा है, ओके, अब ये जो ब्रश है जब ये घूम के यहाँ चला जाएगा तो ये करंट की डायरेक्शन उल्टी होने वाली होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसी फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा है ना, उसी फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा है। तो इसमें जब क्या होगा, मान लो जब ये ब्रश इसके साथ कनेक्ट है यहाँ तक, तो ये क्या मिल रहा है इसको, पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेकिन अब जब यही ब्रश इसके साथ कनेक्ट हो जाना था तो उसको क्या मिलना था, नेगेटिव हाफ साइकिल मिलना था। लेकिन सॉरी, ये ब्रश अगर इसी के साथ रहता तो इसको क्या मिलना था, नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि उस टाइम की डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जानी थी, अपोजिट हो जानी थी। लेकिन ये ब्रश क्या होता है, किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ, क्योंकि ये क्या होगा, ये रोटेट होके कहाँ जाएगा, इधर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, यस सर। दिस इज हाउ द कम्यूटेटर वर्क्स। This is your armature. This is your generally wounded armature, but generally we have made the armature as in such a way that this is your armature. Armature winding है, लेकिन जनरली हम जो यूज़ करते हैं मशीन, उसमें क्या होती है, कंडक्टर्स जो होते हैं वो बार्स के रूप में होते हैं, ऐसे जैसे आपने पिछले स्ट्रक्चर देखा। This is your same diagram I have found again, and armature orange rotor machinery is cylindrical in shape and slot of the carry the armature winding. The armature is built on a thin laminated circular sheets. Now I am talking about the structure. Just like your transformer, there are talking about some losses.
जस्ट लाइक योर ट्रांसफॉर्मर इन केस ऑफ डीसी मशीन क्या हो गया, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस आर आल्सो देयर. ओके, सो बिकॉज जहां भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उस वहां पे क्या होंगे, हिस्टैरिसीस. और हिस्टैरिसीस लॉसेस का रीजन क्या होता है, मटेरियल. क्या होगा, मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ. और वी हैव टू, अब हिस्टैरिसीस क्या है, हमें जिस भी मटेरियल का BH कर्व नैरो होगा वो मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा. किसके लिए, जिस भी मटेरियल का BH कर्व नैरो होगा वो उसको बोलेंगे, उसकी क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होंगे, बिकॉज उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इसलिए जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसके लिए भी जो मटेरियल की सिलेक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए अच्छा मटेरियल यूज करते हैं. एंड एडी करंट लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस. क्या लिखा, थिकनेस. अब थिकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, लैमिनेशंस आर यूज्ड. मींस अगर आप देखोगे तो दीज आर लैमिनेटेड, दीज आर नॉट ए सिंपल स्ट्रक्चर. ये आप देखोगे ऐसे लाइंस दिख रही हैं धीरे धीरे, और वैसे ही इसमें लाइन दिख रही हैं, तो दीज आर लैमिनेटेड. वाई दीज आर लैमिनेटेड, टू अवॉइड द फ्रिक्शन एंड एडी करंट लॉसेस. So this is for the general introduction for the electrical machines on the basis of structure. On the basis of windings, they are in series and parallel, means rotor and stator windings. These are series and parallel. We can divide the machine into series and shunt machines, which we will discuss later in next lecture, because there are some equations which are coming into play, and in this lecture you have to only study for basic structures. What is the principle is when current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a force, and if that current conductor is placed on the periphery,